हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। टुडे इज संडे, सैटरडे संडे मैं बहुत सारा स्कैनिंग और एनालिसिस करता हूं। इनमें से कुछ स्कैन जो मैं वो कर लेता हूं आप लोगों के साथ, सबके साथ मिलके, ताकि हम लोग देख सके व्हाट्स हैपनिंग। तो ये वीडियो में हम लोग ग्लोबल मार्केट को देखने वाले हैं। एंड मेंबर्स, एज अ टोकन ऑफ थैंक्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए पहले रिलीज होगा, so you have longer time to watch this, whereas for general public it will be released on Monday. So this is my token of thanks to you. Let me go. This is मैं एक चार्ट, बहुत टाइम से हम लोग इस स्टॉक को फॉलो कर रहे थे, वैसे उसी स्टॉक्स को देख रहे थे। दैट इज सोलारा। कुछ बहुत ही अच्छा किया, लाइक न्यूलैंड लेबोरेटरीज इन आवर, हमारे जो लिस्ट में है, न्यूलैंड हैज डन वेरी वेरी वेल। तो बट हम लोग ओवरऑल इंडिसेस को देखने वाले हैं, स्टॉक्स को नहीं। और जब इंडिसेस को हम लोग देखने वाले हैं, तब सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दुनिया में इज S&P 500। और जब हम लोग इंडेक्स देखते हैं, उसको कैश स्टॉक्स वीकली नहीं, जो मैं स्टॉक के लिए इस्तेमाल करता हूं, आइदर फाउंटेन ऑफ गोल्ड या तो इंडेक्स फ्यूचर। तो चलिए, मदर इज सेट अप फाउंटेन ऑफ गोल्ड। S&P 500 वीकली चार्ट तो खराब है ही, डेली से हम लोग देखेंगे क्योंकि दीज आर ट्रेडेबल। तो हम लोग इसको ट्रेड करते हैं। करंटली आई एम शॉर्ट ऑन S&P 500 एंड लॉन्ग ऑन VIX। This is S&P 500 bearish, fully bearish। इक्विटी के ऊपर डाउनसाइड प्रेशर, तो हम लोग क्या कर किए हैं, S&P को शॉर्ट किए हैं वाया द राइट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये रहा S&P का शॉर्ट वाला 19th ऑफ जुलाई मेजर सेल ऑफ के साथ। एंड फाइनली अगेन अपॉर्चुनिटी मिला टू डू द सेलिंग, एंड S&P इज सिग्निफिकेंटली मूविंग लोअर। लेट्स लुक एट डाउ जोन्स। डाउ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है बाकी जो नैस्डैक और S&P दोनों से, काफी बेहतर परफॉर्म किया है डाउ। ये रहा सेल सिग्नल आ चुका है, एंड डाउ हैज आल्सो रीच्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ 40,000 एंड ब्रोकन लोअर टुवर्ड्स द एम्प्टी लाइन। ये देखिए, ऑलमोस्ट एम्प्टी लाइन तक डाउ का डिक्लाइन हुआ है। दिस इज अ बिग ड्रॉप ऑफ डाउ। So this is looks doesn't look good इक्विटीज के लिए, स्पेशली इंटरनेशनल इक्विटीज के लिए। तो इंटरनेशनल इक्विटीज ब्रॉडली S&P 500 these indices मैं शॉर्ट साइड ही मेंटेन करूंगा। कोई लॉन्ग पोजीशन के बारे में अभी बिल्कुल ही नहीं सोच पा रहे, क्योंकि मैं डेली चार्ट में ऑपरेट कर रहा हूं। हो सके इंट्राडे में कोई किसी को 15 मिनट्स में लॉन्ग करने का चांस मिल जाए, पॉसिबल वेरी मच। But on a long game, this is my daily chart I'm observing. So daily chart hisab se, I'm sorry, I don't get any kind of buy signal, but more of a selling pressure still intact. Nasdaq broken a very important support, and very likely, very likely, it is going to decline further, at least towards 18,200. Another 300.2% around Nasdaq can drop. आफ्टर दैट आई थिंक देयर विल बी सम सपोर्ट्स कमिंग आउट, वहां से सपोर्ट आना फिर से चालू होगा। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। लेट्स सी नैस्डैक हम लोग देखिए। अब हम लोग देखेंगे यूएस का रासेल, विच इज स्मॉल कैप मिड कैप। रासेल बहुत ही वोलाटाइल है। वी सॉ अ बिग मूव, बड़ा मूव आया है रासेल में। रासेल काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया था, बट फाइनली गिव अप एंड रीचिंग द सपोर्ट ऑफ 2135, एज वेल एज ये जो एम्प्टी लाइन 2105, ये जो सपोर्ट जोन है, इस पे पहुंच चुका है। आई थिंक रासेल कैन ड्रॉप इवन फर्दर। तो अगर रासेल बाउंसेस बैक, माय फोकस विल बी इन द कमिंग डेज टू टेक अ सेल रेजिस्टेंस अपॉर्चुनिटी इन रासेल। तो सेल रेजिस्टेंस अपॉर्चुनिटी के लिए जब करेक्शन चालू होगा, आई गो टू 125 मिनट। इसको बोलेंगे फाइन ट्यूनिंग। सादा नीचे नहीं जाएंगे कि 125 30 15 ऐसे करके नहीं। 125 मिनट्स इज अ फाइन ट्यूनिंग। तो यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, ये ग्रीन सॉक्स करेक्शन के बाद ही आई प्रेफर टू एंटर रासेल। ये विलशायर 5000, this is US का broadest measure of equities, total market kind of।
it has also a sell signal, relatively much better performer than S&P or Nasdaq, but a sell signal is prevalent. This is no ordinary sell, मतलब this is significant, एक पॉइंट बन चुका है, एक टॉप बन चुका है मार्केट का इन इंटरनेशनल में, एंड ये निफ्टी को इम्पैक्ट करेगा. आई एम नॉट श्योर, पॉसिबली निफ्टी का भी एक इंपॉर्टेंट टॉप बन चुका है जो हम लोग जल्दी देखने वाले हैं. तो लेट्स नाउ गो टू एशिया. एशिया में क्या देख रहा हूं? सिंगापुर, नो पॉइंट गोइंग लॉन्ग, बियरिश, शॉर्ट ट्रेड मेंटेन करेंगे अगर कर रहे हैं तो. हांगकांग वही बियरिश, बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे. हांगकांग लास्ट टाइम आई वाज looking at the comeback on the buy side was here. If it could take a support of 17,009, but it could not, fail. Next हम लोग देख रहे हैं चाइना. China is bearish, no point going long. Then we are taking look at Japan. Significant decline चलते जा रहा है, and Japan very likely देख के लग रहा है much bigger decline in store, possibly towards 32,000. A drop like this would mean that possibly Japan could not break higher of its 40-year high, which was made in the 1990s. It was just about to cross and could not cross and now crashing down. जापान क्यों इतना गिर रहा है? इसके पीछे जो जापानीज सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज एंड जापानीज येन का शार्प इंक्रीज, दीज टू आर मेजर रेस्पॉन्सिबल. ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो चुका है बाइंग, ऑस्ट्रेलिया में सेलिंग छा गया है, और न्यूजीलैंड में जो लगातार बाइंग चल रहा है, इट वाज अ बुलिश इंडेक्स, बट वहीं पे भी पॉज हो रहा है, या वी आर सीइंग पॉज एवरीवेयर. सो बुलिश मूड में पॉज या तो मेजर केस में हेवी सेल ऑफ, यही नजर में आ रहा है. अभी तक जो भी चार्ट हम लोग देखे, लार्जली ओनली दिस न्यूजीलैंड चार्ट हैज लुक्ड समवॉट बुलिश, but man, that means majority of the other जो major indices है, they are not good. Even look at South Korea, one of the semi-developed country in the Asia, not good. You can look at, this is more of a range-ish, this is but not good. Vietnam index, this is Nifty 500, saw the big moment, big bearish moment, so definitely an important top has been made. Next week we may see a bounce back, but bounce back के साथ sellers will likely to remain prevalent. Sellers very much likely to remain prevalent, और sell resistance का शायद opportunity इस्तेमाल किया जाएगा. तो हम लोग अमेरिका देखे, एशिया देखे, बाई करने लायक कुछ नहीं है अभी. वो few are strong like Australia, sorry, New Zealand. Australia is still turning, and majority others are completely weak. Maybe Wilshire has not gone down that much, but others जहीं पे भी देख रहे हैं, इस चारों तरफ weakness ही weakness दिख रहा है. It is really not a great time to be aggressive on the equity. ये last Netherlands, what a down move after a comeback के बाद. Look at the line, it's a massive drop and break. So I think things are changing significantly. May this has an important top, I think market का बन चुका है. We can get a bounce back like a in future double top जैसा scenario is very much possible कि यहाँ पे जाके फिर से market comes crashing down. So ये this is very important top, और ये बहुत important है जब हम लोग recession के almost पास आ जा रहे हैं. Look at massive sell off in Italy. Look at Spain. Big break. डेली की हिसाब से लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस आर गेटिंग. फ्रांस तो पहले से ही बैटर्ड था, वहां पे इलेक्शन की वजह से और भी खराब. वेल्थ इज गेटिंग इरोडेड. देयर इज रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्ग था, मैंने लॉन्ग भी किया था इसको, दैट इज यूके 100 फुटसी, बट कुछ जमा नहीं, ज्यादा कुछ हुआ नहीं. इट टर्न बैक. आई हैड टू एग्जिट अराउंड द ब्रेक इवन. So UK 100 was the only one relatively looking strong in Europe. The other indices were heavily weaker. And ये रहा यूरोप का ब्लू चिप इंडेक्स. इसको आप मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप सब लोग देख सको the readings.
So this is significantly down. This is the German index, broken the trend line, long-term trend line. I think a major top has been placed across the indices. And this is happening close to a मतलब recessionary cycle में तो हम लोग है ही. ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ. First leg is the rising leg, मतलब euphoria leg where equities go up, which it did. The euphoria leg started in July 2022. Now we are moving towards the second phase of the recessionary cycle, that is the recession and the crash. So market crash अभी भी सिग्नल नहीं आया है, but market crash को almost पास चलते जा रहे हैं हम लोग. So in such a scenario जब ये important tops बन रहे हैं तब मैं उसको जरूर importance देना चाहूंगा and पैसा हटाना चाहूंगा, हटाने के लिए रिकमेंड करूंगा, बी वेरी केयरफुल होने के लिए रिकमेंड करूंगा. ये हम लोग देखे अमेरिका, देखे यूरोप, देखे. अब हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट का जो ईटीएफ है वो क्या बोल रहा है. ग्लोबल मार्केट भी ऑन द सेल ऑफ मूड. लेट्स लुक एट द इमर्जिंग मार्केट का ईटीएफ एज अ होल क्या बोल रहा है. वो भी इन अ मोर एज अ होल सेल ऑफ मूड. So equities are not doing well since mid-July or mid-July around. It has stopped doing relatively well. ये रहा विक्स वोलाटिलिटी इंडेक्स. इसके बारे में भी मैंने वार्न किया था कि विक्स अगर ऊपर जा रहा है, बी वेरी वेरी केयरफुल. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन. Volatility has significantly gone up. And I am long on volatility using the VIXY, VIXY. This is the exchange traded fund for long volatility. VIXY has gone up too. जैसे ही विक्सी में बाई सिग्नल आया है, विक्सी ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा अप है उस पॉइंट से. सो वोलेटिलिटी इज गोइंग अप. इस सिचुएशन में हम लोग लोअर पोजीशन होल्ड करना पसंद करेंगे. वी विल नॉट बी एग्रेसिव एट ऑल ऑन इक्विटी. सम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जो खराब नहीं हो रहा है. सपोज नाइका I'm long. Let's look at the Nika chart, and I'm looking for big gains, just like Saznol I did. So Nika is not, I'm watching something on the daily chart, then there are a lot of exits. I'm watching Nika on the weekly chart, and I've placed my exits like with short momentum जो है वो bearish आपको डालना होगा या यहाँ पे create, और आपके पास stop loss तो है ही. So this is Nika का break, looking good. So Nika can definitely rise further, give me another 8%, reaching 216. But ultimate price would be Nika crossing above 300, which remains a very much a possibility. तो ऐसे स्टॉक में जब तक एग्जिट ना आ रहा है, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक, आई विल रिमेन, which I think the risk reward potential is great. But as a whole, I'll not be aggressive in stocks. In fact, I have significantly squared off the overall position, and I have built up actually short on US based indices, nothing in India, because India we don't have a signal yet. India में if we look at the Nifty 50, हम लोग देख पाएंगे कि we don't have the signal to sell off yet. Weekly is bullish, white bullish, and here is correction happening in the daily chart. So no, I'm not looking aggression in Nifty. It's not, I'm not looking for short Nifty because the short has not come. Short signal is not there. So I need a short signal to sell Nifty. Whereas I could see the short signal जिसके बारे में मैंने warn भी किया था across the US and European indices. This is a significant सेल ऑफ चल रहा है यूएस का S&P 500 या मदर इंडेक्स में. तो ऐसे मामले में यू डेफिनेटली वांट टू रिमेन वेरी वेरी कॉशियस एंड प्ले इट सेफ. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रोटेक्टिंग द मनी, सेकंड प्रिंसिपल is gaining more money. So that's all, friends. Let's take a quick look at the global equity indices. I hope you enjoyed this discussion. अगर ऐसा हुआ है, don't forget to like the video
and all the best from my side, as well as happy trading.